Okay. So the first graph that I find or that I found a bit different was this one. See, there are 5 cities here, and this is the cost of water, and this is the average annual bill for a family. That's how I read the graph. I look at the diagram first. So there are 5 cities. This is cost of water. This is cost of water. What's the difference between both of them? This is the price up to 125. So their government wants to, like, you can imagine their government wants to, like, incentivize less usage of water. So if the cost of if the people are using like up to 125, they are being charged less, and if they're using over 125 kiloliter, they are being charged this price. So there are two different prices for them, and so that's something that I noticed here. And then there's an average annual bill for a family. Now you are there in the exam. Let's see. I'll give you 5 minutes, all of you. What would you write in the overview? I want two features. क्या लिखोगे overview में? So you decide. You look at the graph. You have this graph. It came in the exam. What's coming to your mind? What would you write? All anything. Try anything. Uh, All Sydney, overall, it can be seen that Sydney has the highest average annual consumption of water for a family. So not consumption. Sydney, नहीं हुई है. Perth. Okay. First of all, Dheeraj, there is no consumption given in this graph. No, So no, this is no. You can see in the third line, yeah, uh, uh, the 335 is the highest number. yeah, but that is not consumption. What is that? Average annual bill for a family, Yeah. So which and is the highest average annual bill? no average. Sorry, average annual bill is highest for Perth. Very good. Okay, so that would be one feature, but you're using the wrong tense. Is nahi aayega, was aayega, but that is Uh, fine. Perth had the highest average annual bill, had had, or the average annual bill was the highest in Perth. Both are fine. Okay, done. Second mm, feature, what would you write besides that? You can also write the minimum here while the okay, Brisbane done. had the least Bill. water annual bill for a family. Okay, now I want the second feature. What would you write apart from this? Uh, What did Trupti say? And maximum cost? No, I would not talk about maximum here. I would look at something else. okay, Cost this of one. water per kiloliter, whether it's up to or over, in Melbourne, Brisbane, as well as in Sydney, it's same. Yeah, while in Adelaide and Perth. Very good. Perth and Adelaide in Perth and Adelaide, the cost of water per kiloliter over 125 is quite is significantly high as compared to the cost of water per kiloliter up to 125. Okay, good. So, so basically, if I translate that, I want to make it simpler. But what you say, I'll say the same thing. In Melbourne, Brisbane, and Sydney, if you can look up to 125 and over 125, the cost is the same. So can I say cost did not depend upon usage? The cost is irrespective. The water, you will be charged this price. ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना यूज करोगे तो cost did not depend upon usage or consumption in Melbourne, Brisbane and Sydney. Is that clear? Can I say this? Yes, Everyone, sir. yes. Everyone, is it clear? Cost did not depend upon usage. You can see जो मेरे को पैसे लगने हैं जो मेरे को चार्ज होना है वो इतना ही चार्ज होना है 0.83 0.83 0.78 0.78 it doesn't matter I use 125 or you use 500 they are going to charge me 500 into 0.83 जो भी मेरी यूसेज होगी उसको 0.83 से मल्टीप्लाई कर देंगे बट इन एडिलेड एंड पर्थ द कॉस्ट इंक्रीजेज विद यूसेज अगर आपकी यूसेज बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है or so the cost depends upon usage in a way depended on usage so Adelaide and Perth the cost increased with the usage of water while in Melbourne, Brisbane and Sydney the cost did not depend upon the usage of water. That would be my second feature. If someone does not understand that, please let me know. Otherwise that is going to be Sir, second overall. Yeah. sir, I cannot Okay. Okay. understand.
Okay, so understand पहले तो ये understand करते हैं. Do you know the difference between cost? What is cost? You understand? Cost means money, Yeah, that somebody is charging us, right? Right? charging. Okay, so this is Yes. given per kiloliter. Clear? So Hmm. per kiloliter, you understand, for That example, if I use 100 kiloliter, they'll multiply this by 100. They'll say 100 into 0.42. Like we have electricity charges, it multiplies with the units consumed. Clear? If you use more units, you get more charged. Is it clear? okay. Okay. Now they have two costs. If you use up to 125, they charge you this much. Okay, for consumption up to 125, they're charging you this much. And if your consumption is over 125, they're charging you this much. Is this clear? Okay. Yes. Okay, so now see, in Adelaide, the cost depended upon consumption. Isn't it depending on consumption? If your consumption increase, the cost is also increasing. Do you agree? One Yeah. up to 1 second. Up to 125 Don't means don't up to uh, 125 and over 125, I'm using one word consumption. See, this is okay. consumption. If people are using below 125, they are being charged this price. If they're using over Okay. 125, they are being charged this. 125. Okay, Okay, so sir. the word I'm using for up to and over is consumption. I'm calling it consumption. Itna use karoge, this is usage. Clear? Okay, sir. So the cost depended upon usage. In Adelaide and Perth, can you see that it depends upon consumption? So here the rate is different, and if your consumption is more, the rate is different, or the cost increased with consumption. If your consumption is increasing, your cost is also increasing. Is that clear? Yes. While if you look at, let's look at Perth, let's look at Melbourne, Brisbane, and Sydney. See, the cost below 125 and over 125 was the same. Why that same? Yeah. Because it is written cost of water per kilometer over 125. So even over 125 consumption is over 125 also same. Okay, so now simplify it. Can I say cost did not Okay. depend upon consumption? It does not depend. Cost did not depend upon consumption. Can I say that? It doesn't matter you use under 125 or over 25, the cost will be this much. Can I simplify it? Huh? Cost in same range. Yeah, so Uh, cost remains the same. That's what I'm saying. The cost remains the same irrespective of consumption. The consumption does not matter. Clear? The cost is okay. the same. So I'm saying Okay. cost did not depend upon consumption. Is it clear? Yes. Yes. Okay, so Okay. that's what we are writing here. In Adelaide and Perth, the price increased, the cost increased with consumption, while in Melbourne, Brisbane, and Sydney, the cost did not depend upon consumption. And here you can go highest and lowest. Now, does anyone have any doubts here, or we are okay with it? Okay, sir. Can you tell what is this question number in your book? I don't know. It's there in tables. You'll find it. It's one of these. Okay, I think 194, 190, 195 out of one of these. Okay, I don't know exactly the question number, but it'll be nearby there. Okay, 194, sir. 194. 194. Okay, done. So let's move on. Now let's discuss the body paragraphs. Anyone wants to discuss the body paragraphs? So first, I'll have one body paragraph for this part and one body paragraph for this part. This part, you have to tell me which approach you'll use. I've used this approach many times. You know this approach. Which approach will be using for this approach? This one. Please tell me. All of you know. Batao, you've done this so many times. Yeah. The Left to top right, top down. to bottom. Top to down, doctor sir. Top to down. We'll use top to down here for this part. I hope it is clear. If you don't Yeah. remember top to down, remember this. You go from highest. This is number one. It was followed by Adelaide. The next highest was in Brisbane, Sydney, number three. And then fourth, Melbourne. And then finally, least in Brisbane. Like that. Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay, so this is one paragraph. You go top to down here and you give for all five cities. Done. Now you come here. Here I'll do one paragraph. First, I'll talk about Adelaide and Perth. And I'll say the cost increased with the usage. And then I'll say the cost up to 125 was this much.
while the cost over 125 was this much. Similarly, in Perth also, the cost up to 125 is this much, and it increases, and it is 1.50 for usage over 125. Done. By contrast, in the remaining three cities, the cost did not depend upon usage, or the cost remained the same. The cost did not remain the same. You can write the cost of water remained the same. Okay, and then you can say the cost was 0.83, 0.78, and 0.98 respectively. You can do it like that. Here, it will be fine. Sir, can we say in Melbourne, Brisbane and Sydney, cost was fixed? Yeah, the cost did not depend. Yeah, cost was fixed. It did not depend upon usage. Yes. Okay, good. So, is it clear? Yes, sir. Okay. Anyone, any doubts in this part? If you don't understand, you can watch the video again. If you're clear, then it's fine. I'm not doing this. Okay. Sir, we have to be very careful when writing past tense. Like it is 2004, we have to use past tense, right? Yes, Was. you have to use past tense. Yes. Yes, Okay, okay. Okay. Yeah, that, Okay. So, this point I'll keep in mind. okay. I'll do one thing. I'm not doing top to down. I'll do this paragraph for you really quickly. I'll tell how I'll write it. So in Adelaide, see my point. See, data for me is less important. For me, what is important is when you write, right? I read your graphs. You focus a lot more on data. Don't focus so much on data. Data is used as an example. I'm not saying skip data. What I'm teaching you, listen, I'm going to give the data, but my point, illustrate your point. Okay, the cost increased with usage. For usage up to 125 kiloliter, the cost was $0.42 per kiloliter in both the cities. Is it fine? Tell me. Any doubts till now? Yes, sir. Okay. However, over 125 kiloliter, the cost was $1 and $1.5, sorry, per kiloliter respectively. In the two cities respectively. So that's it. So I'm just saying the cost in Adelaide and Perth, the cost of water, if you want clarity, I'm just starting the paragraph. So let's say the cost of water increased with usage for usage up to 1 kiloliter. The cost was for this much in both the cities. However, for usage over 125 kiloliter, the cost was this much and this much respectively. That's how I would have written for these two cities. Isn't it simple? No confusions. I've given a lot of clarity here. Now I'm going to say by contrast, in the remaining three cities, the cost of water was fixed. Let's use your word. And in the bracket, I would say did not vary with usage. So just to clear, what do I mean by the cost was fixed? That it did not vary with usage. You know the meaning of this? Is it clear? I'm just giving clarity. So the cost of water stood at 0.98, 0.83, sorry, 0.98 and okay, I'll just give it 0.98 in Sydney, $0.83 in Melbourne, and $0.78 in Brisbane. I've forgotten per kiloliter. The cost of water per kiloliter. Let's do it here. Okay, stood at this much and this much and this much for both
For both usage under 125 kiloliter and over 125 kiloliter. That's it. And my paragraph, Sir, yeah. when we can use stood at, So that just a synonym of was. You can use it anywhere when you're giving the data like that. stood at, at का synonym क्या है? Was. Was. It's a synonym for was. Simple. Something was $5. So I write stood at $5. I can say that. Okay. Anyone, any doubts here? Please let me know. Otherwise, see, now this is giving so much clarity. I've done comparisons. I've written the by contrast word. It is understandable. I could have used on the other hand as well here. And I've explained everything. The main difference I've explained. And see, when you read mine, what is the focus on? Do you think I'm giving a lot of data? No. What do you think? I would say that you're learning something. You're learning that Melbourne, Brisbane, and Sydney, the cost does not depend upon usage. And you're learning Adelaide and Perth, it does. It increases with usage. That's the main thing that should come out when you read something. It should not look like a boring data. It should look like something is being told to us here. So that should be your approach. Anyone, any doubts now, or I'm moving forward? This graph is done in my opinion. If anyone has any doubts, I can explain. Otherwise, moving forward. Clear? No, sir. No? No doubt. Here is No everything. doubt. Okay, done. Let's go next. Okay. This is another very difficult question. Okay. So what does this show? Yeah. So what does this question show? It shows the total number. See, this is one country, Britain. How many people from four other countries are living in Britain? That's what the graph is showing. For example, how many Germans are living in Britain? How many Italian people are living in Britain? How many Polish are living in Britain? How many Spanish are living in Britain? This is that data. Total number of outsiders or foreigners from these four countries living in Britain is this much. Out of this 363 point, this much is these many are from Germany, these many are from Italy, these many are from Poland, these many are from Spain. That is what is given. Do you understand this? Yes, sir. Okay. Similarly, here Germany. How many people are living in Germany from Britain, from Italy? How many Polish people are living there? How many Spanish? Total number of people living there are this much. So that's it. And then finally, now you have a total here also. This total is how many British people are living in other countries. How many British people are living in Germany, Italy, Poland, Spain? The total is given. How many British people are living in outside countries? How many German people are living in foreign countries? How many Italian people are living in foreign countries? How many Polish people are living in foreign countries? How many Spanish people? You have to first understand the difference between this and this. ये वाले लोग रह रहे हैं. These people are, and this is the country where they're living. This is the country and these people are living in that country. They have not given, see, British कितने ब्रिटेन में रह रहे हैं वो नहीं फर्क पड़ता. Outsiders कितने रह Migrant people. Migrant people, yes. So it's about migrants from these four countries. So first of all, tell me, do you understand this graph? Yes, sir. Okay. Yes, If sir. okay, and there's a lot of data. That's what makes it very, very difficult to write. So first thing I want to tell you, what you're going to do here is you are not going to write this whole figure. You're going to write it in millions or lakhs. Make your job easier because if you write the whole figure, I promise you it will take you a lot of time, which you're not going to do. So for example, I'll make it 11.5 lakhs around approximately something like that, or roughly 12 lakhs if you want to do it. I don't care about that. You can take a rough figure, do it, but don't write 1173,000. So first suggestion for me, because these are large numbers, you can do that. So like for example, and now, so this is the first suggestion. Second suggestion is you can pick any approach you want. You can write it like this, or you can write it like this. One way you can write. So you pick whichever way you want to write, you can live. Or you can Sir, write. Yeah. sir, like top to down to the approach which we can use that also. And the left to right, we use that in years. नहीं left. Okay. So first of all, see पहले तो top to down body paragraphs का अलग है, overall का अलग है. ठीक है? Hmm. You can use top to down in body paragraphs. You can use it both ways. So top to down का मेरा मतलब क्या होता है? First of all, tell me what's my meaning for when in body paragraphs. Do you know the Uh, difference?
Yeah. So In top to in body paragraphs, it has a different meaning. What does it mean? Anyone? In body paragraphs, what do I mean by top to down? Highest to lowest. Very good. Highest to lowest. So see, अब मैं देख Shikha, I'm doing left to right, but I'm going to go from highest to lowest. So see, I'm saying सबसे ज्यादा ब्रिटेन में कौन से लोग रहते हैं? Polish. Number 1 is Polish. ठीक है. अब नंबर 2 पे कौन है? Germans. नंबर 3 पे कौन है? Italians. नंबर 4 पे कौन है? Spanish. This is also top to down, but this is highest to lowest. इसको मैं top to down कहता हूँ body paragraphs. okay, sir. ठीक Okay. है. So this is this approach. Or you can write it like this कि कितने ब्रिटिश लोग रह रहे हैं. So सबसे ज्यादा ब्रिटिश लोग कौन सी कंट्री को प्रेफर करते हैं? इटली को. Italy. नेक्स्ट हाईएस्ट ब्रिटिश लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? जर्मनी. Third highest, Hmm. and very few Britishers prefer to live in Poland at only 67. Do you get the point? Like that. Yes, sir. And Okay, this sir. number. Sir, This is top. I have a doubt. Yeah. Sir, how we write overall? Overall, I'll teach. Just come. Let's finish body paragraph, then I'll come to overall. Okay. So first of all, for body paragraph, you pick your approach. You want to go left to right or top to down. You have to pick one. You can't do both, otherwise you won't be able to do it. So I'll just show you total. Like I would say, let's start in detail. I'll do for one country and you can do for the rest. Okay. Around about 11.5 migrants or 5 people, 5 lakh people. I'm comfortable with lakhs. If you're comfortable with million, you can also make it million. It will be 1.17 million. So like that, I'm using it 11.5. If you want to say 12, that's also fine. About 12.5 people um, from other countries, from the other 4 countries. Let's make it proper. Other 4 countries lived in Britain. Out of this is missing. Like out of this 12 lakh, the maximum are from which country? Tell me. Out, Polish. Poland. yeah, Poland. Country is Poland and people are Polish. Out of this, Oh, about, okay, the maximum, you can write maximum people were from Poland, or you can write maximum people were Polish. Both are fine. Maximum people were Polish or were from Poland. Doesn't matter. At how much? At 5.5 lakh. Okay. So Poland was followed by, like say, Poland was followed by Germany with a figure of nearly 3.5 lakhs. sir, Poland was followed by लिखना जरूरी है क्या? That's followed by लिखना. Yeah, sorry, tell me. Poland was followed by. Poland लिखना जरूरी है क्या? I When it was. normally, पता क्या होता है? This sentence becomes too long. Okay, and yeah, वो बनता नहीं है कई बार ना followed by say the way you're making right now, followed by it is joining the sentences. It doesn't normally join sentences like that. So it's a good idea to write Poland was followed by Germany. So you can have it like that. That's a new sentence. You were joining sentences. Okay. So when you don't want to join sentences, you write it like that. Poland was followed by Germany and with a figure of nearly 3 lakh and 2.5 lakhs respectively. And finally, the least people from Spain live in Britain at only at only 20,000. That's how I would do with one country. Now I'm going to do the same process for the other countries. Now tell me if anyone has a doubt here, please let me know. No doubt. Okay, so how many sentences did I use for Britain? I used about 1, 2, 3 sentences, like about 1, 2, 3, 4, 4 sentences. I would say don't go more than three sentences, 3 to 4 sentences for anyone. एक को 10 में मत लिखना, फिर बाकियों के लिए जगह नहीं बचती. Try to curtail yourself. For example, Poland, I'll be very quick. I'll finish this off in 2 sentences. Only see how many people are living in Poland? Only how many? 600. 600. And out of this, near half were from Italy, and and around 360 were from Italy, and the remaining were from Britain, Germany, and Spanish. I would not tell the Sir, individual figures. Just combine them. I
I don't like to write Poland because they have a little amount of people. So can I skip Poland No, you in the can't body paragraph? completely skip. You can't completely skip. Okay. Okay. You have to, but you can give approximation. Like, let me show you. I'll do this, but you'll have an idea. Give an idea. Don't give me all the figures. Okay. Only okay. Only 600 migrants lived in Poland. Um, and out of which are roughly around 360 were Italians, and the remaining were from the other three countries. That's it. I did Poland Okay. in one sentence. So I Yes, did sir. not like to give 67, 76, and 97. It's okay. The Yes. remaining Yes, 240 is sir. remaining out of this, the remaining were from the other three countries. That's it. Yes. And I'm done with Poland in one sentence. You have 5 countries. Please remember, don't exceed one too much के cover ना हो पाए. और जहां पे बनता है वहां पे करो अच्छे से मतलब approximations use. You could have made like around like out of which around half were from Italy, around half out of which around half were Italians, and the remaining were from and the remaining were from the other three countries because 600 ka आधा 300 hota hai. Just give me approximations like that. Works for me in this graph. You don't need to give me the exact figures. And remember, अगर ये पूरा पूरा लिखोगे पता है कितना टाइम लगेगा? You can imagine the time you're going to spend writing, On a huge right? time. Yeah, huge time. So that is why I'm saying. पता है मैंने लिखा है. I know this graph. I've written it. I've faced this problem. So I'm telling you, यहाँ पे पूरी figure मत लिखना, approximation लिख देना, at about कर देना, nearly कर देना. You have those words, use them and write it like that. Okay. And similarly, now you're going to do it for Italy, Poland and Spain. ये वाला total भूल जाना because ये वाला Poland अब ये वाला total हमें हमारे काम नहीं आना है. हमने इसको यूज नहीं करना है. हमने सिर्फ ये कंट्रीज का ही देना है. अगर वो टॉप टू डाउन ऐसे करते ऐसे लिखते तो फिर वो यूज होता. अब नहीं होगा यूज. अब हम ऐसे ही करेंगे. इसको भूल जाना नहीं तो वो बॉडी पैराग्राफ में कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ओके. अब नाउ लेट्स कम टू नाउ यू डू ऑल द कंट्रीज लाइक दिस. आई होप इट इज क्लियर. एनीवन हैज Yes, sir. डाउट्स प्लीज लेट मी नो. No, sir. No doubt. ओके. सो सो लेट्स राइट ओवरऑल. देखो मैं ओवरऑल में ना इसका मैक्सिमम लिखूंगा और इसका मैक्सिमम और मिनिमम लिखूंगा. सो यू गेट व्हाट आई एम राइटिंग द मैक्सिमम टॉप टू डाउन मैक्सिमम एंड आई एम राइटिंग द मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट टू राइट का मैक्सिमम एंड टॉप टू डाउन का मैक्सिमम टोटल में. बाकी इन कंट्रीज को भूल जाओ. यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस नाउ. सिर्फ तुम्हारे पास ये वाला डेटा है. बस ये वाला डेटा देखो, टोटल वाला और ये टोटल वाला. दैट्स इट. नो अदर डेटा यू आर लुकिंग एट. इग्नोर द टोटल, इग्नोर द अदर थिंग्स. सो अब मेरे को बताओ कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा आउटसाइडर्स रहते हैं? विच मैक्सिमम? Britain. Britain Britain. ब्रिटेन. and Germany. Next highest is Germany. No, I don't care about the next highest. I'm writing the overall, just the maximum. Okay, in overall, it can be seen Britain. that So the overall migrant Maximum migrants lived in. maximum Maximum migrants lived in. where from Britain, Britain, While the least migrants lived in. Poland. Poland, Okay, so ये least है, वो highest है. Done. Now you did the same thing. Maximum people migrated from which country? Maximum Poland, migrants were from which country? और maximum migrants की Poland. nationality क्या थी? Polish. Polish. Okay. Poland. Maximum Number ज्यादा है, migrants 7 from digit number. Poland. Okay, and the least migrants were from? British. No. It's Spain. Spain. And Spanish. 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 So ये मेरे overall का ये मेरा overall होगा इसमें. So I'll write the overall for you just for clarity. Overall, the maximum migrants lived in Britain, Britain. while the least lived in Poland. Poland. Yes. And in addition, the maximum migrants were British. Were Polish. No. While the least Poland.
Yeah, verb from Poland or verb Polish by the least to Spanish. That's my overall. If you have any doubts, please let me know now. Otherwise, this is my overall. अब बताओ ये वाला ग्राफ मेरे लिए डन है. If you don't So understand, overall में so we can take both the approaches दो sentence के लिए like इसमें we have taken top to bottom theory and then from left to right also we have taken. हाँ, उसमें अब दोनों करेंगे तो फिर डेटा रिपीट हो जाएगा ना. मतलब you're Yes. putting the data like this. If you give it like this also, it will be repeated. So I have to pick one approach. वो मेरी मर्जी है मैं कैसे लिखना चाहता हूँ. You can pick any of the approaches, your wish. Okay, sir. Clear. Okay. Anyone? Okay, let's see. Let me see chat. Okay. Clear? Tough graph? Do you think it's tough? No, sir. Just a little bit of big amount data. Hmm. I agree. The data is the worrying part here. Otherwise, it's a simple graph. Data डराता है नहीं. टाइम किल कर जाएगा नहीं तो टेबल सिंपल है Simple है. लिखना सिंपल है Yeah. जस्ट ज्यादा लिखना है. Yes. And remember what I told you. We should not focus more on data, just approximations we can write, sir. That's what you want to Write tell. approximations. Don't the data is not important. Don't make data. Yeah, absolutely. Okay. How does it matter if it's not 1.6 lakhs, it's 1.5 lakhs, it's 90,000, it's not 91,000. How does it matter? It's 2.2 lakhs, it's 4 lakh total, it's not 4 lakh 3,000. It doesn't matter. Okay. 4 lakh people are living there. Write that. Around 4 lakh were from Britain. Italy mein. Around 4 lakh British people lived in Italy. That's it. Doesn't matter. Okay, 4.3 So lakh. we can use some words for this approximately Yeah. at around at about Yeah, something like that. Nearly, right? Nearly. Yeah, सर yeah. मुझे समझ में नहीं आया बॉडी पर कौन सा अप्रोच आप टॉप टू डाउन ली या लेफ्ट टॉप टू डाउन ही करा है पर मैंने लेफ्ट टू राइट में देख. टॉप टू डाउन का मतलब बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है? बॉडी पैराग्राफ में होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, राइट? यस अब ये देख मैंने ऐसे करा है पर मैंने टॉप टू डाउन करा है. अब मैक्सिमम टू लोएस्ट करा है. देख इसको भूल जाए, टोटल है. अब बता इन चारों में नंबर वन पे कौन है? हाईएस्ट कौन से लोग हैं? पॉलिश पॉलिश. तो ये नंबर वन है. नंबर टू पे कौन है? पे जर्मन्स. जहाँ ये सही यहाँ जर्मन नंबर थ्री पे कौन सा लाइन सर लेफ्ट टू राइट ब्रिटेन ही चल रहा है अभी. ब्रिटेन को खत्म कर. अभी ब्रिटेन खत्म नहीं हुआ. अभी भूल जा बाकी सब कुछ. यू आर डूइंग वन कंट्री ओनली. इग्नोर अदर कंट्रीज. ओके. ब्रिटेन में नंबर वन कौन से थे? पोलैंड से. ब्रिटेन में नंबर टू कौन से थे? शायद ये जर्मन. जर्मन नंबर थ्री इटालियन एंड नंबर फोर. स्पेनिश ये अब चीज मैंने टॉप डाउन करके लिखी है कि ब्रिटेन में मैक्सिमम लोग कहाँ से थे? पोलैंड से. पॉलिश नंबर टू पे कौन थे? जर्मन एंड इटालियंस. एंड नंबर लास्ट में कौन थे? सबसे कम कहाँ से थे? स्पेनिश स्पेनिश थे. तो लाइक दैट. इज इट क्लियर? टोटल इतने लोग रह रहे हैं ब्रिटेन में आउटसाइडर्स. इसमें से इतने इधर हैं, इतने इधर से, इधर इतने इधर से, इतने इधर से हैं. फिर यही बात मैं नेक्स्ट कंट्री के लिए करूंगा, नेक्स्ट कंट्री के लिए करूंगा, नेक्स्ट के लिए करूंगा, नेक्स्ट के लिए. तो एक एक कंट्री का टॉप डाउन है. मैंने 5 कंट्रीज के लिए टॉप डाउन करना है. पहली कंट्री का ब्रिटेन का टॉप टू डाउन हाईएस्ट टू लोएस्ट. फिर जर्मनी का टॉप टू डाउन, फिर इटली का टॉप टू डाउन, पोलैंड का टॉप टू डाउन. पोलैंड का तो मैंने एक लाइन में ऐसे कर दिया. स्पेन का टॉप टू डाउन. लाइक दैट. डू यू अंडरस्टैंड? यस सर ओके चल सर एक लेते हैं. चल हम करते हैं. स्पेन का लेते हैं. चल बता. टोटल पीपल लिविंग इन स्पेन. टेल मी हाउ मच. टोटल टोटल पीपल लिविंग इन स्पेन. 9 9 lakh. Can you say 9 lakh? यस Yes, sir. Okay. So the अराउंड 9 लाख yeah, the total people living in Spain was roughly 9 lakh. Okay. Okay. Out of this, around 4 lakh were from which country? इटालियन Okay. Out of this, around 4 lakh were Italian. Italians. Okay. Done. Very good. Okay.
And the next highest were from which country? The next highest were from next. कहाँ से थे? Next highest, सिर्फ स्पेन का देख रहे हैं. Ignore other countries. You're okay. not okay. Don't. German. Yeah, the next highest were from which country? German. Next, Germany. Germany, Germ. right? 4 lakh and 3 lakhs. Okay. From the next highest were from Germany at around Sir, can we start this paragraph by in Spain? तो सबको समझने में इजी हो जाएगा. In Spain. So yeah. simple. The easiest way to write body paragraph is like decreasing order, right? Highest to lowest. Yeah, yeah. Then sir, Polish. Yeah. Yeah, yeah. And see अब ना उनको combine कर दे एक sentence में कैसे बोल देगा and around 80,000 and around 90,000 and 70,000 were from Britain, were from Spain and Britain respectively. ठीक थोड़ा थोड़ा करके चारों दे देने हैं that's it. जैसे मर्जी दे दे, you have to say this. So अब देख Spain, I've taken 3 lines, I've covered Spain. Now you do it for every country like this. So एक एक कंट्री को उठा के उसको फिनिश करना है, उसके अंदर टॉप टू डाउन लगाना है. So जब स्पेन कर रहा हूँ, forget about all the other countries. Don't look at other countries. Don't look like this. Don't look any other way. Just finish Spain. स्पेन को फिनिश करके आगे चलेंगे. कुछ नहीं करना और. Is it clear? Yes. Anyone has doubts here? Please let me know now. No, sir. No? You do the same for other. What you said is fine Yes, also. sir. So what Sameem suggested. So if you're having confusion, you can write in Spain. Yes. That way, that will give you a bit more clarity so that you don't get confused. So is absolutely right. Do that. That will help you out if you're getting confused. Yes. Okay. Any doubts? That will be easy to understand. Yeah. Okay. The data is overwhelming. Don't look at the data. I tried to make it easier for you. Make it easy for yourself. Okay. कुछ डिफिकल्ट नहीं करना. डेटा को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 86,000 90,000 क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. Do it like that. Okay. So moving forward, this graph I'm done with. I'm not this. If you're not clear, please watch the video again. You'll understand. I've taught how to write the overall and I've taught how to write the body paragraph. I think you can write the introduction on your own. चलो इस graph में आते हैं. Again, I leave it to you. If this graph comes in the exam, how would you do it? Take 5 minutes. Tell me. सर AUD का क्या मतलब है? Australian dollars. Okay. सर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का क्या मतलब है? Sorry. एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का क्या मतलब है यहाँ पे? सेल्स, सेक्टर मतलब इंजीनियरिंग. सेल्स में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग सेलिंग का काम करते हैं, इंजीनियरिंग की जॉब्स कितने लोग करते हैं, आईटी एंड ओके. टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में कितने लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में. सो दैट इज जस्ट ओके सर. इंडस्ट्री. इट्स द नेम ऑफ इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री. Sir, we have three sector. Three things. We have three things. We have 5 sectors and 3 things. 3 types of salaries. What are the 3 types of salaries they've given? Maximum, minimum, and average. So first of all,
Do you understand the meaning of maximum here? क्या मतलब है? चलो, forget all the other sectors. पता है, when you try to understand things ना, block out things. So इसको block out करो, यहाँ पे cross मारो, इसको तुमने देखना नहीं है अभी. Just ignore this thing. Sorry. Just ignore all of these four. Okay, you get my point? Ignore that. Please ignore that. Okay, now tell me, what does it mean कि maximum salary इतनी है sales में? What do you understand by this? Maximum the employees in the sales sector earned was 2,16,000. Very good. And the minimum salary in this sector is how much? 27,000. And the average salary? 70,000. Okay, so एक average employee earns this much, maximum employee earns sales में इतना, and minimum sales में कितना कमाया जाता है इतना. ओके, Yes. मेरे को बताओ कि सेल्स में, अच्छा ठीक है, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आंसर करो. कौन से सेक्टर में मैक्सिमम एवरेज सैलरी सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में? Sales. Sales sector. आई रिपीट, Engineering, sir. Sir, engineering. sir. एवरेज सैलरी. Engineering. Average. Engineering. Engineering में sir. Average. ओके, एवरेज. एंड विच सेक्टर हैव द लोएस्ट एवरेज सैलरी? Traveling. 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 चलो ठीक. Traveling. अब ये एक ओवरऑल में बता देना बस इसका. ठीक है, डन. Okay. कैन यू से दिस? Yes, sir. ओके, चलो अब मैं इसका बताता हूँ. अब मेरा क्वेश्चन सुनना, अच्छे से सुनना. Please listen to my question. If you listen what I'm saying, you'll write a very good graph. सबसे ज्यादा सैलरी में वेरिएशन कौन से सेक्टर में? अगेन क्वेश्चन, अगेन सबसे ज्यादा वेरिएशन का मतलब क्या होता है? फर्क. मतलब कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा. Fluctuate. हाँ, मतलब कितनी सैलरी में कितना, सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन से सेक्टर में है? So engineering? Engineering. No. No. Sir, sales? Sales. Sales, yes, Sales. sir. Can you see why sales? Can Because anyone? 2 lakhs, Because then 27. maximum is ज्यादा. मैक्सिमम बहुत ज्यादा है और मिनिमम Yes. कितना का वेरिएशन? Minimum बहुत कम है. बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना? 27,000. है ना? Difference between minimum and maximum हाँ is large amount. हाँ, ठीक है. लार्ज नहीं, सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सेल्स में. अच्छा, सबसे कम कहाँ पे है ये डिफरेंस? सबसे कम वेरिएशन कौन से सेक्टर्स में है? Sir, traveling. Education. Traveling and education. Sorry. Traveling and education. No. Traveling. Traveling Education में. both. ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन बोथ, डजंट मैटर, दोनों लिख दो, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में. राइट, ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन. क्लियर? This is the second feature that you're going to write in the overall. The first feature you're going to write maximum average salary कहाँ पे है और minimum कहाँ पे है. The second feature you're going to write, अब ना मेरे को वो लिख के बताओ. I don't think you'll be able to write this. What I want you to write. Confuse हो जाओगे तो चलो, let's see if you're able to write what I want you to write. मैंने नहीं लिखना है, मैंने तुम्हारे से लिखवाना है. चलो बताओ. बताओ, पहले तो मैंने लिख दिया, वो वाला मैं लिख रहा हूँ. सेल्स, सॉरी, इंजीनियरिंग. It's clear that a lot of you put बिना बात के कैपिटलाइजेशन. यहाँ पे कैपिटल है, इसका ये मतलब नहीं है जब लिखोगे कैपिटल आएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी इन कैपिटल. ठीक है, वो डायग्राम है, डायग्राम में सब कुछ कैपिटल है. मिनिमम का एम भी कैपिटल है, इसका ये मतलब नहीं है मिनिमम लिखोगे तो कैपिटल आएगा. डायग्राम को देख के डिसीजंस नहीं लेते. दैट इंजीनियरिंग sector have the maximum average salary while traveling at the least. This is my first feature that I want to write. If anyone has any doubts here, please let me know. बताओ. No, sir. No doubt. चलो, अब दूसरा बात तुमने लिखना है. In addition, second feature. बताओ, what would you write? मैक्सिमम जो सैलरी मिल रहा है वो सेल्स में. ना, मैक्सिमम तो यहाँ मिल रहा है इंजीनियरिंग में. एवरेज में बताना. नहीं तो तुम्हें यहाँ पे देख मैंने क्या लिखा है. In addition, education and traveling sector had had minimum variation. Okay. So first of all, you Sir, get I want to say. okay, say it. Samir. In addition, sales Sales had the sales maximum sector, salary. sales sector had the
maximum salary, whereas maximum variation in salary, whereas education and traveling had the least variation in salary. तो अब मैं बताता हूँ तुम क्या कर रहे हो। चल यूसुफ, जब तूने बोला, तूने मैक्सिमम बोला, ये सारे मैक्सिमम है, देख सारे के सारे मैक्सिमम है। अगर तेरे को इनका मैक्सिमम बोलना, 2 बार मैक्सिमम आएगा। सो पता है कैसे आएगा सेंटेंस? वो बड़ा अजीब लगेगा, बट आई मेक इट फॉर यू। मैक्सिमम का मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम का सर हमने सोचा तो तब मैंने स्टॉप हो गया। मैक्सिमम का मैक्सिमम कैसे आएगा? दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट। ओके, अब मैं इसको कर सकता हूँ। यू कैन से दैट, यूज द वर्ड हाईएस्ट इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम, द हाईएस्ट मैक्सिमम सैलरी, बट वो okay, so I don't want you to write that, and for doing that I'm telling you variation consider करनी है यहाँ पे। वेरिएशन क्या होता है? फर्क, मैक्सिमम एंड मिनिमम का। वो सबसे ज्यादा सेल्स में दिख रहा है, सबसे ज्यादा फर्क। एक को इंडिविजुअली नहीं देखना, आप इकट्ठे देखना है। फर्क बहुत ज्यादा है। सी, 2,27,000, वेरी बिग डिफरेंस। एक जना तो मिलेगा सेल्स में, वो 2 लाख कमा रहा है, दूसरा जना तेरे को मिलेगा वो सिर्फ 27,000 कमा रहा है। Why does sales have such a big difference, anyone? Because sales depends upon, sales में क्या Sir, so that Marketing, marketing. no this no is no, what's the word I'm looking special for? graph. Target. No, Target. no targets. What's the other word? No, What, sir? commission based होता है Commission, sales में। commission. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इफ यू सेल, अगर कमीशन मिलता है, हर एक सेल पे आपको कमीशन मिलता है, डू यू एग्री? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए ज्यादा है ना। कोई बंदा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वो कमीशन बहुत ज्यादा कमा रहा होगा। कोई नया अभी नया ज्वाइन कर रहा होगा, उसका कमीशन नहीं आ रहा होगा। सेल्स सेक्टर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कमीशन। दैट इज व्हाई देयर इज अ Yes, ह्यूज sir. डिफरेंस हियर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इन एडिशन, तो अब यहाँ पे ये ऐसे लिखना है, मैक्सिमम वेरिएशन इन सैलरी। आई न्यू यू वुड नॉट बी एबल टू राइट इट, यूल गेट कंफ्यूज्ड। इसको अकेले मत देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा तुम्हारे से। मैक्सिमम का मैक्सिमम वो लिखना, मिनिमम का मैक्सिमम वो छोड़ो, मिनिमम का मैक्सिमम, मिनिमम का मिनिमम, वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। इट विल नॉट बी, Yes, sir. विल नॉट साउंड राइट। Okay, so let's see. Some of you also highest difference in salary was in sales. Yeah, highest difference in salary range, yes, was in sales. ये भी ठीक है, चलता है। Highest salary range was in sales. Okay. Yeah, चलो। अब मेरे को बताओ बॉडी पैराग्राफ कैसे करेंगे। एवरेज का तो बहुत सिंपल है। एवरेज का क्या अप्रोच लगाऊंगा मैं, दोबारा बताओ। You know, Top to bottom. Top to down. bottom. top to bottom. Top to bottom means highest to lowest. Is it clear? Yes, Yes. sir. Engineering was followed by sales. The next highest was in this sector, and finally least in traveling. You know how to do this. This method is done. Okay. अब ना मेरा एक क्वेश्चन अच्छे से सुनना। Okay. किस सेक्टर्स में there's a huge variation? I'm not saying maximum variation. I'm using the word huge variation in salary. किन sectors में? Give me answers in sectors. Which Sales. huge? Engineering, Sales. IT and telecommunications. Okay. Sales में है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. Obviously sales. Engineering? Variation. Engineering में भी है sir. Engineering What also. about IT and Yes, sir. communication? IT also. IT, IT also. ठीक है। अच्छा, और किन सेक्टर्स में तुम्हें लगता है बहुत लो वेरिएशन है? Education and traveling. Traveling है, सर ट्रैवलिंग में है सर, लो एजुकेशन traveling है। ट्रैवलिंग में सर। It Traveling and education. both, yes. Both. तो अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले तुम लिखो कि इन तीनों में ज्यादा है, इनका डेटा दो, डेटा में दिखाओ कि ज्यादा वेरिएशन है, दिखाना आना चाहिए। ओके, Yes. तो अब वो बात दिखाना कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को ये करके दिखाता हूँ, बिकॉज तो ये मेरे को तुम्हें होमवर्क के लिए भी देना है, तो सी है हाउ वुड आई डू। सो आई स्टार्ट लाइक दैट इन डिटेल। Sales and engineering had a considerable a variation की जगह, if you want to write difference between maximum and minimum salary, you can write that if you want। कुछ जगह variation, कुछ जगह ये लिख देना in salary। Okay, sales, engineering and IT, I'll write all the three। and यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत ज्यादा difference है।
Okay, sales engineering and IT and telecommunication. Okay, मेरे को बताओ यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज करा है ह्यूज के लिए. व्हाट्स द वर्ड आई यूज फॉर ह्यूज? लेट मी जस्ट होल्ड ऑन एक सेकंड, रुको. मेरे को क्या करूँ मैं? Can't do it. Okay, let's do it like this. I want it to be on a single page. Okay. यहाँ पे I have written the word considerable. This is a synonym for what? Huge. Huge. Huge, Very good. large amount. ठीक है, large. Significantly. अच्छा ठीक है. अच्छा अब मेरे को इसका और maximum difference का फर्क बताओ. What's the difference between considerable and maximum? Maximum सबसे ज्यादा है. Very But good. considerable means एक नहीं, 2 और 3 भी हो सकते हैं. हाँ 10 भी हो सकते हैं. एनी Yes, sir. 10 भी पर हो ज्यादा, सकते पर ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, देखो हाँ. ये है ज्यादा, ये है सबसे ज्यादा. फर्क है. अच्छा अगर मैं मैक्सिमम लिखता अब, ओके ओनली यहाँ पे सिर्फ एक चीज आती, कौन सा आता? कौन Yes. सा सेक्टर आता? Sales आता. Sales आता. Sales आता सर. ठीक है, पर कंसिडरेबल में मोर देन वन आ रहा है. इज More इट than क्लियर? one. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. ओके, चलो अब इन तीनों का डेटा देते हैं दिखाते हुए कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है. चलो, इन सेल्स द मैक्सिमम सैलरीज कितनी थी? 2,16,000 AUD, right? While the minimum was only कितना? 27. 27,000. आप बताओ, ये लिखा, ये पता चल रहा है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मैक्सिमम सैलरी कितनी थी? अराउंड was this much, while the minimum was only this much. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. In case of engineering and IT, the maximum salary was roughly 1.5 lakh. 1.5 lakh AUD. वो AUD भी आना है बाद में, डॉलर्स. ओके, एंड 1 लाख AUD. इफ यू वांट टू डू इट, अगर पूरा प्रॉपर लिखना है तो लिख देना रफली 1,50,000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ज्यादा यहाँ पे है नहीं डेटा, सो इफ यू राइट द फुल थिंग ऑल्सो, सो यू कैन डू दैट एंड रिमूव. इफ यू वांट टू डू दैट. इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें बहुत ज्यादा था. ओके, while the lowest stood at only around 37,000 in both the sectors. That's it. I'm done with the top 3. पता चला कि नहीं? मैंने मैक्सिमम भी बता दिया, मिनिमम भी, पर मैंने अलग अलग करके नहीं बताया. मैंने इस पे में बताया कि इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो मैंने यहाँ पे बताया कि इनमें इतना था और मैक्सिमम इतनी थी, वाइल मिनिमम इतनी थी. अब बताओ कोई फर्क पता चल रहा है? व्हाट I've written here? Anyone has any doubts यहाँ पे? No doubt, sir. ठीक है. ओके, इफ यू आर क्लियर, आई वांट एग्जैक्टली व्हाट आई वुड राइट हियर. चलो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे. By contrast, वेरी गुड. education and traveling, बाय कंट्रास्ट, हाँ आगे. education and traveling यहाँ sector had यहाँ had the lowest. West. No, No. no. Had the marginal difference. But don't say it's not marginal. Okay, so I'll say What was? okay, significantly less variation in salary. Now I'll use the word less variation. Significantly. Significantly less variation in salaries. That's it. And then you give the data. A combined Yes, around like this, 65. Yeah. like fast business. Yeah. The maximum salaries in this sector was around the maximum salary in the sector. Around, 1 second. Was Around around 60. 70. 70,000. Yeah, or you can write 65 to 70,000. Yes, 65,000. So
70,000. While the lowest, the minimum was only 30,000. Yeah, 32 to Was only not 32. around 32,000. You know. Okay. Like that. This is the paragraph for maximum minimum. इतने में मैंने लिख दिया, ये लिखना है. अब बताओ, if you are clear here, if you are not clear, please let me know. 1 second, I was getting a phone call. You look at it and tell me if you have any doubts. Clear, sir. Clear. No doubt. No doubt? Okay. 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 Anyone else, any questions, please let me know. Okay. So there are only two graphs like this in your book. One I've taught you. Another one is this. In this case, the salary is in pounds. There's no other difference. So I want the same thing to be done here. So same cheese karni hai. I leave it to you. You're going to write it. Is that fine? सर इसमें भी एवरेज ओवरऑल में एवरेज देना है. ओवरऑल में एवरेज देना और फिर वेरिएशन सबसे ज्यादा किसमें, वेरिएशन सबसे कम किसमें. सो एवरेज मैक्सिमम फिनांस में या सबसे ज्यादा वेरिएशन फिनांस में. ओके, सबसे ज्यादा वेरिएशन फाइनेंस में, सबसे कम वेरिएशन मैन्युफैक्चरिंग में. नो. सॉरी सर होटल्स में सॉरी होटल्स में. होटल्स में मैक्सिमम इज ओनली 2000 एंड Yes, मिनिमम इज अराउंड 1000. ठीक है, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, इन तीनों को कंबाइन कर देना. क्या बोलना, रफली कितना है, $1000, 1000 pounds, 800 to 1000 you can write if you want to. अराउंड. ओके, अच्छा ठीक है. और फिर ये तो टॉप टू डाउन करके दे देना, राइट. बॉडी पैराग्राफ. फिनांस हैज द मैक्सिमम ओके, एवरेज एक बार मंथली सैलरी. एक बार रिपीट करते हैं फॉर यूसुफ. यूसुफ देख, सबसे पहले विल राइट द मैक्सिमम फॉर एवरेज एंड मिनिमम फॉर एवरेज. दैट इज सिंपल, दैट यू विल बी एबल टू राइट. ओवरऑल फाइनेंस had the maximum average while hotels had the least average salary. Done? Is that clear? इसका Yes. maximum और minimum. Okay. अच्छा, Yes. अब यहाँ पे देख, इनका डिफरेंस देख, इनको मत देख, और रफ डिफरेंस देख. जैसे ये 7500 है, ये 1500 है, फर्क कितना हो गया, अराउंड 6000. सबसे ज्यादा डिफरेंस अगर तू देखेगा फाइनेंस में, मतलब देख कितना ज्यादा फर्क है, 75, मतलब 7500, 1500, बहुत फर्क है. सो सबसे Yes. ज्यादा फाइनेंस में, और सबसे कम इफ यू सी जस्ट $1000 के आसपास का, 1000 pounds का डिफरेंस है होटल्स पे. इसमें 2000 का, इसमें भी 2000 के ऊपर का है, इसमें 4000 का है, इसमें सिर्फ $1000 का. तो सबसे कम डिफरेंस इसमें. दैट विल बी योर सेकंड फीचर, कि फाइनेंस हैड द मैक्सिमम वेरिएशन इन सैलरी while hotel had the least variation in salary. Is it clear? ये ओवरऑल हो गया. Yes. ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा, लाइक इट्स अब वो करते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स पे आते हैं. दिस दैट वाज सी, वो ओवरऑल की बात कर रहा था. अब मैं ठीक है. बॉडी पैराग्राफ्स की बात करते हैं. चलो, बॉडी पैराग्राफ्स को इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड करो. चलो करो, किसमें ज्यादा वेरिएशन है, किसमें कम वेरिएशन है, कौन से सेक्टर्स में तुम्हारे हिसाब से ज्यादा वेरिएशन है. फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आल्सो. कंस्ट्रक्शन है, फिर मैन्युफैक्चरिंग भी लेना पड़ेगा. Means so we need to Finance, subtract transport in subtract one, numbers. body paragraph, 7000. construction, manufacturing, and hotels in the other. So finance and transport for a big variation, and construction, manufacturing, and hotels with less variation. Is it clear? Yes, Yeah. sir. Okay. Yeah. What was your doubt, Dheeraj? Sir, for variation, we have to see the differences of maximum and minimum. That's one. That's variation, right? Variation क्या होती है? सबसे ज्यादा फर्क सैलरी में variation. Okay. I understood. So approximately 7450 minus 1300, approximately around 5000, 6000. 6,000. Yeah. Mm. But don't write that. Don't give me the Okay. data for that, right? Tell me Yeah. the difference like this.
Around maximum is 7,500, while the minimum is only around 1,500. That's how. Okay. 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 Anyone has any doubts here? No, sir. नो, तो यू हैव टू राइट दैट। और मैंने ये बताया, इन तीनों को मैं कंबाइन करने वाला हूँ, देख लेना। इन तीनों को मैं कंबाइन करने वाला हूँ। मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड होटल्स में मैं दूंगा मैक्सिमम इतना इतना इतना, वाइल मिनिमम तीनों में अराउंड $1,000। तीनों में अराउंड $1,000 है। ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे। डेटा को कंबाइन करना सीखो। इसको नहीं मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। वाई आई एम नॉट टेकिंग ट्रांसपोर्ट टुगेदर? पहले तो मेरे को बताओ, ट्रांसपोर्ट का भी तो लगभग बराबर ही है। वाई एम नॉट टेकिंग ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड होटल्स? सर वेरिएशन हाँ, वो वेरिएशन ज्यादा वालों में आ रहा है पहले, राइट? वो तो ऊपर लिखा गया। अब तीन ये बचे, ये तीनों इकट्ठे लिखने हैं, तो इन तीनों में कंबाइन करूंगा। उसको नहीं कर सकता। सिर्फ डेटा पे मत जाया करो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yeah, yeah. Yes. Yes, sir. यस। ओके, सो ट्रांसपोर्ट वाला मैंने कंबाइन नहीं करा ना। तुम सिर्फ डेटा को देख के लिख देते हो, चलो इन चारों में ऐसे ऐसे नहीं करना। उसको छोड़ दो, वो हो चुका है। वो कॉन्सेप्ट ही अलग था। वो कॉन्सेप्ट था बिग वेरिएशन इन सैलरी। बिग वेरिएशन है इन दोनों सेक्टर्स में, उसको अलग से लिख चुके हैं। अब लिख रहे हैं कम वेरिएशन है, इनमें तो वेरिएशन ही नहीं है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैक्सिम वाला $1,000 ज्यादा कमा लेता है, क्या फर्क है? If I'm saying in rupees, it doesn't sound a big difference. If I say it in pounds, it's a big difference. But yes, but there is considerably less variation. इनमें तो huge variation. See, the maximum a person is earning 7,500. The minimum is 1,500. Very, very big variation. Okay. Anyone? Any doubts here? So you have to write this. No doubt. I have a request for you. You have a ओवरऑल में भी अच्छे बैंड स्कोर के लिए थोड़ा अच्छा हाई लेवल एनालिसिस करना पड़ता है सर। overall में तो करना ही पड़ता है। Okay, okay, yeah. Rather than body paragraphs is much more Yeah, important. yeah, yeah. Understood now. Like we are if you are doing more questions, we are getting more ideas. Okay, this one is actually simple. Top to down लगाना है, सबका अलग अलग, लेफ्ट टू राइट में टॉप टू डाउन। सी, ऐसे नहीं होगा। मेरे को बस ये बताना था, इसके अंदर ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा टॉप टू डाउन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे एज है, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे पॉपुलेशन बिफोर पॉवर्टी लाइन है। दीज आर फोर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यू आर गोइंग टू टेक वन कैटेगरी एंड गो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। So Utah, then California, then Florida, then similarly aged over this thing, Florida, this thing and this thing, then average income per person, 23,000, 22,000, 17,000, like that, top to down, and then population before poverty line. अच्छा, अब ना एक चीज मेरे को बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग लगी। लेट्स सी इफ यू कैन टेल मी द रीजन। चलो मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा पावर्टी कौन सी स्टेट में? यूएस की कौन सी स्टेट में? इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावर्टी कौन सी स्टेट में? सर कैलिफोर्निया में। वेरी गुड। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा पावर्टी है ना, राइट? कैन यू सी दैट? यस सर। ओके, अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ पे है? सैलरी सर पॉवर्टी तो ये सर इधर उताह में। कैलिफोर्निया में। California. सबसे ज्यादा पॉवर्टी तो उताह में। उताह सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ पे? दोबारा। California. कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ही है। कैलिफोर्निया ओके, में सबसे ज्यादा पावर्टी। कैलिफोर्निया। ओके, सबसे ज्यादा पावर्टी। पॉवर्टी उताह में। उताह में। नो, पावर्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पहले सही ओ बोला। पॉवर्टी सबसे ज्यादा, सॉरी सर। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ही है सर। हाउ डज इट हैपन? दे हैव द मैक्सिमम सैलरी, दे हैव द मैक्सिमम पावर्टी। ऐसा कैसे हो रहा है बताओ? Because here, sir, we have taken average income. हाँ, तो एवरेज इनकम तो बहुत अच्छी है वहां पे। एवरेज में तो पुअर पीपल हम्म। इंक्लूडेड है। सो व्हाई इज इट मैटर? तुम रहे नहीं हो ना। तुम जाओ कैलिफोर्निया में, जाके रहो, पता चलेगा कैलिफोर्निया में महंगाई बहुत है। कैलिफोर्निया में कुछ नहीं आता है। अगर जैसे घर का रेंट यूटा में होगा ना $100, कैलिफोर्निया में होगा $1,000। इतना फर्क है। तो तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा है। सैलरी ज्यादा है पर खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो मेरी बहन का घर है, वो मतलब 500,000 का होगा। कैलिफोर्निया में वही $10 million का होगा उसका घर। मतलब इतना फर्क है। तुम सोचो, 500,000, 1 million भी नहीं, $10 million। इट्स सच अ कॉस्टली प्लेस कैलिफोर्निया। दैट इज यहाँ पे सैलरी ज्यादा होने से कुछ नहीं हो रहा, पावर्टी ज्यादा है। सो महंगाई ज्यादा है। यू अंडरस्टैंड? लाइक लाइक इंडिया में इतनी सैलरी कोई कमाता होगा तो बहुत अमीर होगा। राइट? तो महंगाई भी नहीं है ना, देखो खर्चे नहीं होंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में नहीं सर, खर्चे नहीं। महंगाई बहुत है लेकिन वो महंगाई तो ज्यादा ही है सर इसके इसमें महंगाई कुछ। ज्यादा है, व्हाट आई मीन इज, पर कंपेयर टू यूएस थिंग्स आर चीपर।
I did not. So you get the point. महंगाई was the wrong word, Jasmine, right? But think फुल deeper, right? जैसे कि take a cucumber for example. You know, I love eating cucumber. पर जब मैं हम्म यूएस में गया वहां पे $1 का एक आता है. तो जब हम्म अब मैं गया था, जब मैं recently गया था, I'm telling you the day I landed, then this was 2010 I'm talking about. आई वेंट एंड आई थॉट चलो मैं 4-5 लेके आता हूँ. वहां पे गया $5. मेरे को घंटे के मिलते थे $7-8 दिन में. अगर मैं $5 के मतलब खीरे ही खा जाऊंगा दिन में, तो क्या क्या होगा. It was such a हम्म funny situation for me. ऐसा Yes. So it was such a weird situation. Or people also pay, but they earn a lot, right? तो फर्क ऐसे है. Okay. So anyways, so धीरे धीरे when I started earning in their dollars, and I became more comfortable spending. वो हो जाता है. पहले आपको लगता है, पहले you convert everything. You say $5, 5 खीरे $200 के, ठीक है, $400 के. You do it like that. You multiply the dollars with नहीं money. ऐसे ये कन्वर्शन ही सर बहुत मुसीबत करता है सर, कोई खर्चने का मन नहीं करता, हम कन्वर्ट करते हैं सर इंडिया के मुकाबले। But when you start living there for many years, then you forget about conversion. यस सर। चलो, so is this clear? This is a very easy graph, but मेरे को ये बताना था, इसमें ऐसे नहीं करना comparison, इसमें ऐसे ही होगा. बस इतना बताना था. Not a very complicated graph. You can do it. Okay. And सबका एक एक फीचर लिख देना. मैक्सिमम अंडर 18 पॉपुलेशन कहाँ पे? यूटा में. मैक्सिमम ओवर 60 पॉपुलेशन कहाँ है? फ्लोरिडा में. ठीक है. एंड देन से मैक्सिमम एवरेज सैलरी कहाँ पे है? वाइल मैक्सिमम पॉवर्टी भी यहाँ पे. ठीक है. So you can say that. So सबका एक एक मैक्सिमम बता देना ओवरऑल में. That's it. एज अंडर 18 का मैक्सिमम, एज ओवर 18 का मैक्सिमम, एवरेज इनकम का मैक्सिमम, पॉपुलेशन बिफोर पॉवर्टी लाइन का मैक्सिमम. चारों का मैक्सिमम लिखेंगे. चारों की एक एक बात करेंगे ओवरऑल में. देन 1-1 ईच. एज अंडर 18 का बता देना. यूटा में मैक्सिमम है. यूटा इज फॉलोड बाय कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा एट दिस मच एंड दिस मच. एज ओवर 18 maximum in Florida, next highest California, least in Utah. Salaries you can talk about, then you can talk about population below poverty line in the same method. Anyone, any doubts here? You can do this, I think. क्या कर लोगे? बताओ. सर Doable? हमको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लिखना है इस Yeah, present tense, right? ग्राफ को, दैट्स इट। Okay, right in present, yes. Hani hai. We'll use है. Okay, that's it. That was the last graph. सर आई हैव अ रिक्वेस्ट। Yes. I want one or two class from you, listening and writing. Writing में सिर्फ इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, टॉपिक, सेंटेंस एंड कंक्लूजन. दैट्स इट. One or two class. Sis. Sir, it will be very effective for all of us. I believe this. No. ऐसे मैम टीच सुनी. मैं मैम का पता है क्या है? मेरे को प्लान करना है नेक्स्ट ग्राफ्स. I if I pick up this work also, पता है ज्यादा हो जाएगा. I'll try. Sir, one or two class just for Okay, 1 or 2 introduction classes and I'll do. conclusion and topic sentence. Okay, I'll take one class on topic sentences and intro. सर Yes. सर आपने एक्सप्लेन किया था ना, वेरी फ्यू जब क्वेश्चन में होता है तो उसको फॉल्स करने के लिए क्या होएगा? वेरी फ्यू मींस बहुत कम. ये मैं सब भूल गई थी, कल कर रही थी कुछ. आई थोड़ा लास्ट क्यू वेरी फ्यू No. द रीडिंग Very few is little only. See, there are two words, a few and few. Very few is अ also, फ्यू. okay. So a few means little quantity, meaning there are few, like one, like 2 out of 100. I would use the word a few. ओके And ओके. if it's zero, it's nearly zero. I would probably 0.1, like very, मतलब zero ही अ मान. लिटिल बिट. Yeah, like नहीं लगाना, के बिना. When you use a few without then it's zero. So for example, ओके. let me, okay, India has, okay, I'll use it with little. Now, both the sentences are totally different. Can you imagine? एक ने सारा sentence बदल दिया. Now you will tell me the difference, all of you. If you don't know, then you'll learn today. Tell me, what's the difference in the two sentences? What do I mean when I say the first thing? What do I mean when I say the second thing? Like, Sir, don't know. India has little chance
सो बिल्कुल चांस ना के बराबर, एंड इंडिया हैज अ लिटिल चांस, थोड़ा सा उससे ऊपर चांस है शायद विक्ट्री मिल जाए। when I say the first thing, तो मैं ये नहीं कह रहा थोड़ा सा ना के बराबर, I'm saying zero. मैं कह जीरो। रहा ओके। हूँ ओके, आई एम सेइंग चांस ही नहीं है, इंडिया हैज लिटिल चांस ऑफ, जैसे मेरे को किसी ने बोला टीवी बंद कर दो, इंडिया हैज लिटिल चांस ऑफ विक्ट्री, आई से दैट, तो टीवी बंद कर दो, इंडिया हैज लिटिल, लाइक क्रिकेट मैच आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देन इंडिया हैज अ लिटिल चांस ऑफ विक्ट्री, आई से थोड़ा चांस है, बट आई एम स्टिल होपफुल कि चांस अभी भी चांस है, मैं अपने पेरेंट्स को, इंडिया हैज अ लिटिल चांस ऑफ विक्ट्री, लाइक आई एम सेइंग दैट आई वांट टू वॉच इट, इंडिया हैज अ लिटिल चांस, अभी है थोड़ा चांस तो है, सो यहाँ पे थोड़ा चांस है, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कोई चांस ही नहीं है, मतलब इंडिया हैव लिटिल चांस ऑफ विक्ट्री, इट्स अ बोरिंग थिंग, इट्स लाइक दिस, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। Okay, so like that, I would say that. Anyone, any doubts? Please let me know now. This is something that you can comes in handy in reading a little bit, just to understand things better. Okay, एक दो read writing में भी एक दो questions हैं. I'll cover those questions to give you more clarity about this. But otherwise, this is it. Any doubts? Any other doubts? No, sir. No, sir. Sir, you can make one or two classes for that, as someone told, for uh, writing part 2 essays, sir. I'll do it. पहले मेरे को ये खत्म कर, अब मेरे को okay, चलो. I'll do classes for that also. I'll plan it out. I'm planning. But now you practice all of this. Now you decide, you write. I'm making I told you on YouTube I'll make a group, and YouTube I'll make a this thing, and you can watch all these table videos. 5 or 6 हो चुके हैं. I think there are, how many classes have I taken for tables total? Does anyone I think remember? 5 to 7. मे बी फाइव। Six or five. 5, 5 to 6. Okay. Today, 6 हो। 6. okay. This Today is is today is 6th, sir. Okay. So I promise you, अगर तुम ये 6 classes कर लोगे ना, तो तुम्हारा nearly 50% syllabus, 50 to 60% syllabus of graphs is done. And another 10 classes I would say, क्योंकि ना एक maps and process है वो completely different है, तो और मेरे को लगता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है. मैप्स एंड प्रोसेस को 5 classes दे दो, वरना डेटा वाले ग्राफ्स के लिए आधे से ज्यादा काम हो चुका है. एनी डेटा ग्राफ इफ यू डू दिस अप्रोच यू कैन अटेम्प्ट इट. थोड़ी लाइन ग्राफ में थोड़ी सी वेरिएशंस हैं, वो एक कराने वाला है, एक रेटिंग वाले ग्राफ्स हैं वो कराने वाले हैं, दैट्स इट. अदरवाइज एनी ग्राफ, बार, टेबल, पाई, you write with this approach. I have the same approach anywhere. अगर ये 4 कर लोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वही approaches मैंने हर एक ग्राफ में लगानी है. It doesn't matter for me the graph is which one, but you need to do that. सर जिसमें पाई और जैसे मतलब ऊपर 2 पाई होते हैं और नीचे एक ग्राफ होता है सर, जैसे इस फर्क तरह। फर्क नहीं पड़ता ना पाई में, अप्रोच बस मैं ये देख के लगाता हूँ ना, देख. So okay, just hold on, just to give you confidence I'll open the book and show you. Okay. तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है मैं बस। मैं जो बताऊंगा दो। ना कंफ्यूजन का कोई, मैं I'll just give me, hold on just one second. ओके।